Also, I'm just sharing that I received a request from Rotarian Anita, Advocate Anita, that she wanted to go ahead and share her views first because she has to go somewhere. So I will call her out first. Being called to order. A very good evening to everyone. I request President Koel to please confirm the minutes of the meeting of the last meeting. Yeah, minutes of the last meeting was circulated, and as we have not received any comments or objection, hence I presume that the minutes have been approved by all the members. So I confirm the minutes of the previous meeting. Thank you very much. Taking forward the meeting, the agenda for today's meeting is discussion on to inform and analyze the recent Delhi High Court judgment on unrelated living organ donation by Rotarian Advocate Ramesh Sharma and Rotarian Advocate Anita Mahapatra. Before that, I'm just going to read out a brief introduction of Rotarian Anita Mahapatra. One moment. Please still to join us. No, so we will go with the Rotarian Advocate Ramesh. Ramesh Sharma, please. Yes, please. Sure. In that case, I request Rotarian Hemlata Bhandari to please read out the brief introduction of Advocate Sharma. Good evening, everyone. Wishing you all a prosperous and delightful Magra Sankranti with abundant harvest of happiness and success. Rotarian Advocate Ramesh Kumar Sharma is the chairman of Jnana Deep Shiksha Bharati Senior Secondary School, Mathura. He is a leading lawyer of Western UP with more than 44 years of practice. He is regularly appearing in Supreme Court and different high courts, including Allahabad, Madhya Pradesh, Delhi, Andhra Pradesh, etc. He is extensively practicing constitutional, civil, and taxation matters. He is also rendering social services. He is secretary of Kans Nikandan Trust, Mathura. He is founder secretary of Civil Lawyers Forum and president thereafter. Thank you very much for sharing, Rotarian Bhandari. I now request Advocate Sharma to please come forward and share his views on the topic just mentioned. Please unmute. Also, Rotarian Anita has just joined in. Firstly, I'm thankful to Mrs. Bhandari who has given a introduction of my name. Coming to the topic, this judgment of Delhi High Court was delivered on 4th of January this year. By this judgment, some lacunas in our law have been tried to be filled up by the judgment of the Delhi High Court. As is well known that in the matter of the organ donation, the patient requires a transplantation as early as possible. But as per our law, a prior permission is to be taken from the government authorities. A special committee, authorized committee is there. And thereafter an appellate authority is also there for sanctioning such permission, or if his permission has been refused, then go to the appeal and for getting the judgment of the appellate court. In this case, the patient was a retired officer of the Indian Air Force and he was diagnosed a kidney failure in March 2017. He was under the treatment of different hospitals, including Vedanta Hospital at Gurgaon. In December 18, he was advised to have a kidney transplantation. Immediately thereafter, he managed a kidney donor who was his near friend and applied for the permission for transplantation. The proceedings of permission were going on and no permission was granted for long. Ultimately, in 2019, he filed a writ petition before the Delhi High Court for direction to the authorized committee and other government authorities, including the Gangaram Hospital, in which hospital the operation of transplantation was to be conducted, to decide the matter as early as possible. Now, the important thing is, on 24th of February 2021, Delhi High Court has given a direction to the authorized committee to take a decision within 2 weeks of the date from that order. As the
severity of the patient was growing high, and it was very necessary to take decision as urgent as possible. But surprisingly enough, up to about 8 months of the direction of Delhi High Court, no decision was taken by the authorized committee, and the matter was being prolonged on one pretext or the other. Somewhere a interview is being called, then that lockdown and COVID period has come, then again the meeting were adjourned, then some member is not available. So many things were there. And it's very sad to inform all of you that patient died in October 2021 without getting the transplantation. Donor was ready, patient was ready, hospital was ready, but transplantation could not be completed due to all these lacunas. Because of in our law, that is the Act and the Rules, Act of 1994, Rules of 2014, there is no prescribed time limit for this authorized committee to do the things in a limited period. Now, after the death of the patient, actually, the cause of action of this writ petition has been abolished, and writ petition has become infructuous. But I appreciate the version of the lawyer of that petitioner, Mrs. Charu Aneja, who requested the court to continue the writ petition in spite of the fact that the patient has died and writ petition has become infructuous, and to make a specific direction to complete such things within a specific period so that other persons may not die for want of the or waiting for the permission of organ transplantation. And Honorable Delhi High Court continued the proceedings, and ultimately notices were issued to the Government of India, Delhi government, Gangaram Hospital, so many other authorities to give specific suggestions and timeline that what suggestions or timeline can be framed, which has been not provided in the rules or the statute. And ultimately, the Delhi High Court has given a judgment on 4th of January, and a specific timeline has been provided, and the timeline has been provided. Now there is that the processing of the application is to be completed within 10 days from the date of getting the application, and thereafter, if some additional documents are to be required or additional information are to be required, that additional documents or information should be gathered within 14 days of the date of application. And it has been also specified that not more than 1 week of the time should be given to the applicant to file all those documents. And thereafter, that limitation has been provided that the complete process should be done within 6 weeks from the date of 6 weeks thereafter, that is 6 week of the date of the application. And that complete process includes the interview of the patient, donor, and family member if required. And thereafter, within 8 weeks, that is 2 weeks thereafter, the entire process is to be completed and decision is to be taken. Now, the main problem in this process is when the donor is a near blood relation of the patient, that is family member, the formalities are little less. But as per the rules of the organ donation, donor CTC, if the donor is not a family member or it is a friend only, then the committee has to look into that there should not be any commercial transaction between the patient and the donor. And so many aspects are to be considered by the authorized committee. So in case the family member is the donor, the permission is being generally granted quickly, I can say. But in case the family member is not the donor, rather some friend or other person is the donor, then much and more formalities are to be done by that authorized committee. And for that purpose, they are regularly calling firstly the donor himself, thereafter have a meeting after 15 days or 1 month from the family members, from wife, children, then for mother, father, other persons, and meeting going on, time is being passed. So that procedure was very lengthy. And in this case also, in this case, the judgment has been passed. Due to all these reasons, the patient passed. This is really a sadful position. We should try, actually legislature should provide such things. But as there was a lacuna in the law, and the lacuna has been filled up by the judgment of the Honorable Delhi High Court. Now the judgment is there and directions are very much there.
But the main problem is of the implementation of this direction. Because of only by passing the judgment or only by making the law, we cannot hope that the things shall be done quickly unless it is being actually implemented. Now, even if the directions, if it is not being implemented, then the remedy is one can file a contempt petition before the court. Then notices will go of the contempt petition, dates shall be fixed for that purpose, and years will go on, and God knows whether the patient will survive by that time or not. So the practical problem is, now the law is there, but for its implementation. So some machinery is necessary to be provided so that this direction may be actually implemented. And without actual implementation, all the direction statutes are useless. So I think the judgment is quite good, appreciable. It has filled up a lacuna of the law, but it should be implemented actually. That's all. Thank you very much, Very good. Advocate Sharma, for sharing your views. And now I would quickly move on to Advocate Anita so that she can share her views and then we can have a discussion on it. Before that, I'm just going to read out brief profile of Advocate Anita. So she's an eminent lawyer and partner in Attorney Alliance law firm based out of Delhi, having more than 24 years of working in various industries and fields, out of which 12 years in the legal field. Being a daughter of an army officer, she had the opportunity to get her schooling from various states in India. She was an active NCC cadet and marched on Rajpath in the year 1992. She was awarded silver medal in NCC. At present, she is helping most needy women who are the victims at the hands of domestic violence, sexual harassment, rape, molestation, dowry, and property issues by providing free legal services. Apart from her profession, she is active marathon runner, a fitness freak and passionate dancer, and a theatre personality. Thank you very much, Rotarian, for Anita, for being here. And I would request you to please share your views on the topic under discussion. Thank you, Ritika. Good evening, everyone. Good evening, Chairman. Good evening, all the members. I would like to mention one thing, that I won't be available for discussion purposes. I'm a bit in hurry, so can give only my views about this judgment. So आप लोग ने सबने सुना, रमेश जी ने अपने व्यूज बताए. मैं अपने व्यूज क्या बताऊं, वो लिमिटेशन के ऊपर ही है बेसिकली, जो इन्होंने बताया, और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है. मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि ये जो जजमेंट क्यों आया, कैसे आया, और कौन थे इसमें पार्टीज, और एग्रीव्ड क्या था, उनका कंटेंशन क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस किस केस के ऊपर ये जो ऑर्डर है पास किया गया. तो मैं इसमें बताना चाहूंगी, मेनली तो इस ऑर्डर में बेसिकली जो लकुना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ये जो अपना ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही ये जजमेंट आया है बेसिकली. तो इसका जो बैकग्राउंड है इस स्टोरी का, इस पिटिशन का, उसमें ये है कि जो पिटिशनर है, ही इज मिस्टर अमर सिंह भाटिया, और उनके साथ जो डोनर है वो मुकेश कुमार है, वो भी इन पिटिशन नंबर 2 है. सो उन्होंने एक पिटिशन फाइल की. इज लेट मी टेल देयर बैकग्राउंड. वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं भाटिया. उनको हुआ था किडनी डिजीज. तो वो अपनी ट्रीटमेंट करा रहे थे मेडिसिटी हॉस्पिटल बरेली में, उत्तर प्रदेश में. 2017 की बात है, मार्च 2017 में. और 2028, मार्च 2017 से नवंबर 2028 तक वो ट्रीटमेंट करा रहे थे मेडिसिटी हॉस्पिटल में. उसके बाद वो फोर्टिस हॉस्पिटल गए, वहां पे ट्रीटमेंट कंप्लीटली हुई नहीं. फिर नोएडा जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां गए. उसके बाद ECHS पॉलीक्लिनिक बरेली, वहां पे भी उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट कराई. श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल जो बरेली है, उन्होंने एडवाइस किया इनको कि प्रॉपरली आपका आपको हाँ, उनको डायलिसिस थ्राइस इन अ वीक कराना पड़ेगा. तो वो मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है, वहां पे उनको ट्रांसप्लांट, अपना जो किडनी ट्रांसप्लांट का एक एडवाइस दिया गया. 2009 में श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल बरेली ने एडवाइस किया कि आप
उन्होंने भी एडवाइस किया कि आप ट्रांसप्लांट करो। इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन का जो अप्रूवल होता है उसे ऑब्टेन उन्हें करना था। तो वो आर्मी हॉस्पिटल गए जो रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने अलाउ नहीं किया। एंड रीजन क्या था? क्योंकि नियर रिलेटिव नहीं थे जो डोनर है, ही शुड बी अ रिलेटिव और अ नियर रिलेटिव। तो जो सेक्शन हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसमें कहता है कि कोई जो किडनी डोनर है या फिर रिलेटिव होने चाहिए या वेरी क्लोज नियर रिलेटिव होने चाहिए, वो नहीं थे। तो इन्होंने फिर श्री गंगाराम हॉस्पिटल जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है पार्टी, उनको उन्होंने अप्रोच किया और डायग्नोस करके प्लान हो गया कि ट्रांसप्लांट होना चाहिए। पर 2019 में ओके 2000 एक्चुअली आई एम trying to get translated into Hindi, so getting a little bit difficult, but yes. सो उनका जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक फॉर्म 20 होती है, उस चलो आई एम नॉट गेटिंग इन डिटेल। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड फाइनली विथ हिम, that he was not issued a certification of medical fitness, जो डोनर थे उनको इशू नहीं हुआ। So finally aggrieved, both the parties were aggrieved, the recipient and the donor, so both of them came to high court for the challenging this order, that why this has been dismissed। अब यहाँ पे जब इन लोगों का ऑब्जेक्शन आया गंगाराम हॉस्पिटल का फॉर द प्रेजेंट पिटिशन, दे सेड कि वी हैव गॉन थ्रू एज पर द एक्ट, बट 29 जून को जब 24 जून को जब ये लोग अपीयर हुए गंगाराम हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि वी हैव गॉन थ्रू सेक्शन 23 रूल्स 23 ऑफ दिस एक्ट। फाइनली ऑन 29th ऑन 29th 20 अच्छा, उन्होंने ये बताया कोर्ट में, बार बार ये बताया कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रॉपरली नहीं दिए हैं, इसीलिए इनका हम नहीं कर पाएंगे, इनका ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। और इसी दौरान ये सब जब चल रहा था, सोचिए अब 2017 में ही हैज अप्लाइड फॉर डायग्नोसिस चल रहा है, ट्रांसप्लांट के लिए है, कोर्ट में उन्होंने 2020 में फाइल कर दिया है। In the meantime, during the proceedings, he died in 2021, that is 11th October 2029। तो तब कोर्ट में एक रोष पैदा हो गया कि भाई कोर्ट की हियरिंग चल रही है और इनकी डेथ भी हो रही है, बट नथिंग इज बीइंग फाइनलाइज। तब पिटिशनर जो कि एक लेडी एडवोकेट थी, उन्होंने कहा कि टाइमलाइंस विद इन द ऑथराइजेशन कमिटी को एक रूल, उनके ऊपर एक गाइडलाइंस बननी चाहिए जो सेक्शन 94 सब सेक्शन 94 एक्ट में होता है कि इंटरव्यूज का कंडक्ट, कोई भी डिसीजन मेक हो ना हो या कोई भी हैंडल करना हो या अपील प्रोसेस, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड समय होना चाहिए और जो कि डिले है, और इसी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाए और इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, और आज वो नहीं है हमारे बीच। So this like Sharma ji bole, he has said this order was passed during this proceedings। I would like to say, I would like to mention some judgment which they had quoted, with they have cited why it is important, because we are all involved in organ donation। तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, किस किस तरह के पिटिशन इससे पहले भी डिसमिस हो चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। एक केस आया था हाँ, एक केस आया था, एक शेषाद्री वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में है, तो उनका भी फेलियर हो गया था, सफरिंग, ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस किडनी फेलियर, और ट्रांसप्लांट के लिए जब 25 इयर्स तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको जब डायलिसिस के बाद उनको बताया गया ट्रांसप्लांट होना चाहिए। 2017 से 2018 तक उनका इंटरव्यू प्रोसेस, उनका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस वो चलता रहा, एंड फाइनली it could not happen, and his application was dismissed। तो उसमें उन्होंने अपील फाइल की थी। अपील में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो ऑथराइजेशन कमेटी डिसीजन लेती है उसको ओवरटर्न किया था। उन्होंने कहा था अप्रूविंग द नेसेसरी ट्रांसप्लांट, द कोर्ट स्ट्रेस दैट मेयर सस्पिशियस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी शुड नॉट बी रीजंस टू डिनाई अप्रूवल, एंड नोटेड द सिग्निफिकेंट डिले इन डिसीजन मेकिंग।
including the appellate authority's failure to address the petitioner's case. Similarly, एक रत्नाकर पेडाडान स्टेट ऑफ तेलंगाना में इस तरह का मैटर लगा था और डायग्नोस के बाद उन्हें बताया गया था ट्रांसप्लांट होना चाहिए. उसमें वो भी डिसमिस हुआ और उनके जो कमिटी है उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए इन्होंने बताया, कीपिंग इन माइंड द डेलिकेट हेल्थ, जब सिचुएशन बहुत डेलिकेट है तब हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है कि उसका इंटरव्यू भी लो, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन भी देखो, because in this case his right kidney was removed in 2007 and due to internal bleeding, and he had been undergoing dialysis 3 times a week since November 2016 to December 2017. तभी कोर्ट ने बोला कि हमें माइंड में ये रखना चाहिए कि when health situation is so delicate, so फाइनली उस केस में रिट पिटिशन जो अलाउ हुआ था और उनका ट्रांसप्लांट हुआ था. सिमिलरली एक केस में एग्जांपल देना चाहूंगी, राधा कृष्ण पिल्लाई वर्सेस संजीव का एक 2021 में डिसीजन हुआ था. उसमें ये हुआ था, तो द पेशेंट ही वाज अ किडनी पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल एर्नाकुलम केरला में. So he wanted kidney transplant urgently. His driver volunteered to donate his kidney due to he was close to them, as evidenced by the certificate from local authority. Despite legal consent and earlier court direction for the authorities to consider the application, the authorization committee rejected the petition, and reason was due to the donor's involvement in criminal offense. वो donor है but his health is fine, but he was involved in criminal offense, तो reject कर दिया. तब फिर petitioner, इन्होंने petition file किया. Petitioner had submitted the application for permission under this act. However, the final decision in respect of the application was not issued till 8th July 2021, and that too following the filing of contempt petition in the court. तब जाके allow हुआ. And Kerala court ने criticize भी किया such delays and emphasize the need for swift action in the future. It also observed that authorization committee had to follow a pragmatic approach while deciding application under rule 23. तो इसमें ये है कि आप उसका criminal offense देख रहे हो, he is a criminal, but he is perfect for as a donor. तो आप वो पार्ट देखो. इस तरह से जजमेंट आया था. So now I'll come to the overall analysis of this judgment, which was passed on 4th January by Justice Pratibha Singh. तो वो कह रही है, I mean this order जो guidelines पास हुआ इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ जो इन्होंने कहा शर्मा जी ने. इसमें ये कह रहे हैं कि जो 2 स्टेप्स मेन इंपॉर्टेंट है एंड प्रोसेस, एक तो है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, which should be the timeline is 10 days from the date of the application फाइल हुई 10 days के अंदर प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन हो जाना चाहिए. और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म 20 में भर के दिया जाता है वो विद इन 40 डेज में हो जाना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन, अंदर एक टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन हो जाए, उनका जो वैल्यूएशन होता है और ड्यू डिलिजेंस होता है वो कंप्लीशन हो जाए. द डोनर और रिसिप्ट शुड बी गिवन अ मैक्सिमम 1 वीक टू रिस्पॉन्ड, और सिर्फ 1 वीक का समय दिया जाए. डोनर या रिसिपेंट कुछ भी अपने जवाब में बोलना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए. एंड एक आगे और मौका दिया है, कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन डेडलाइंस दे दी जाए ताकि किसी तरह कोई कंसिडर करना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ और समय का समय दिया जाए. फिर वो टाइमलाइन जब एक्सपायर हो जाएगी अपॉन द एक्सपायरी द केस शुड बी प्रेजेंट, फिर ऑथराइजेशन कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाए और इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाए. आफ्टर 4 to 6 weeks, that is say 1 महीने से 2 महीने के अंदर या 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर एप्लीकेशन रिसीव करने के तुरंत बाद इंटरव्यू ऑट टू बी शेड्यूल विद इन 2 weeks पीरियड. जैसे एप्लीकेशन रिसीव होता है 2 वीक के अंदर उनका जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होता है इंटरव्यू जो है शेड्यूल हो जाना चाहिए. During the above 2 weeks window, the authorization committee ought to conduct the interview of the donor recipient on 1 or 2 occasions. Facilitate a meeting of family members, both donor और recipient दोनों के family members से मिले वो within 2 weeks और इसके ऊपर decision दे. So the entire process from submission to decision ought not to ideally exceed 6 to 8 weeks. मतलब 2 महीने के अंदर ये सारा हो जाएगा, submission process, interviews and decision. So उसके बाद अगर you are not satisfied with the order which authorization committee has passed, you can go for the appeal. और उसका भी time limitation है 30 days.
So these suggested timelines are provided as a reference for the complete authority, enabling them to take an informed decision in this matter. And I think this present judgment, और उन्होंने ये भी गाइडलाइंस में लिखा कि ये जो जजमेंट है, let it be placed before the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, ताकि इस टाइमलाइन को इंश्योर किया जाए, जो इस एक्ट में है 1994 और 2014 रूल्स में जो प्रिस्क्राइब्ड है, एंड ऑल द स्टेप्स प्रोसेस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ऑर्गन डोनेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। तो ये चीजें जजमेंट आई हुई हैं। मैं इतना ही बोल के अपना विराम देना चाहती हूँ, एंड काइंडली hand over to Ritika, and kindly allow me, Chairman Saab, if I can leave. I'm a bit in hurry. I have to go somewhere. Okay, you have asked for the leave. I have no option. I have to say yes, but request to all the members are कि whenever you have been selected as a speaker on a particular subject, because the thing is, आपने तो अपनी view रख दी है, लेकिन there are many views which are contradictory to this judgment, and which we wanted to that you should know, because after all tomorrow you are going to be the spokesperson of from the Rotary Club of Organ Donation International. अगर आप खुद क्लियर नहीं होंगी तो आप ये व्यूज पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकती हैं। तो खैर एनीवेज, टुडे प्लीज गो, बट प्लीज लिसन द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस जजमेंट इज नॉट गुड और नॉट बैड. I will not say right now. We will analyze it, and then so please do that. So okay, Thank you. leave is Thank you so granted. much. Thank Thank you. you, everyone. Thanks. All right. So moving on, we have heard the views of both our advocate Rotarian members, fellow members, and I now declare the floor open for question and answers. And I see Rotarian Pramod Mahajan ji raising his hand. So आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है अनम्यूट करने के लिए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही यस नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरे पास एक पेशेंट है, उसका 12 साल पहले आपकी आवाज उसके थोड़ी कम आ रही है, तो फिर थोड़ा सा अगर लाउड कर लें। या जोर से बोलिए थोड़ा सा। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट है, एक अतुल दरवस्कर के नाम का। उसका हमने 12 साल पहले वाडिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके दिया था फ्री में। तो अभी उसका दोनों किडनी फेल हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी, अब उस ठीक है। अभी आपका इसका भी जवाब देंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोद जी उस पे बात पे, जो अभी ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी कवर कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यस, अदर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट जजमेंट? यस, I wanted to know, अब जो है नॉन रिलेटेड में कितना टाइम लगता है परमिशन में आफ्टर दिस ऑर्डर? ओके। टाइम लिमिट हाई कोर्ट ने तो जो प्रेस्क्राइब किया है वही है 10 days from the processing of the application, 14 days from the completing of the. It is for both. It is for family members as well as for non-family members. It is for both. Okay. Are you sure, Advocate Sharma, that it is? Yeah, for yeah. both? In the judgment, it is for both. It is written that for family members also? Yeah, yeah. It is for both. Okay, okay. अभी जो इनका जो क्वेश्चन था अभी, वो क्वेश्चन ये था कि अभी कितना टाइम लगता है। तो अभी की कंडीशन ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल एज वेल एज द ऑथराइजिंग अथॉरिटी। हम आपको एक चीज समझनी चाहिए पहले, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, कि व्हाट इज ऑथराइजिंग कमेटी और ये कौन बनाता है। ऑथराइजिंग कमेटी दो तरह से बनती है, एक प्योर गवर्नमेंट की होती है, जो जिन हॉस्पिटल्स में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, किसी चीज में 25 है, कहीं 50 है, अगर उससे लेस उस हॉस्पिटल में सर्जरी होती है एक साल में, तो ऑथराइजिंग कमेटी उनकी गवर्नमेंट की होती है, उसमें हॉस्पिटल की से नहीं होती। लेकिन जहां पे उस प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा पेशेंट्स की सर्जरी हो रही है, जो इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, इसमें गंगाराम हॉस्पिटल को जो पार्टी बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि उनकी ऑथराइजिंग कमेटी गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली की थी। और जब वो गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली की कमेटी थी, वो लोग, क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी ऑथराइजिंग कमेटी होती है, वो बहुत सोच समझ के ऑथराइज करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऑथराइज कर दिया और कल वो गड़बड़ हुई
तो दे आर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। और गवर्नमेंट वाले इसलिए डिले करते हैं कि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं। तो बोथ द साइड्स, द सफरर इज ऑर्गन रेसिपिएंट एंड द डोनर। मैं बोलना चाहूंगा इस बारे में कुछ। जी, ये जो कमेटी बनती है और जो देर से डिसीजन लेती है, तो गवर्नमेंट को भी एक लॉ पास करना चाहिए कि अगर कमेटी देर से डिसीजन ले तो उनके खिलाफ 3/7 में कार्रवाई होनी चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर पेशेंट मर जाता है। क्यों नहीं लेते डिसीजन? शर्मा जी देखिए, दो तीन चीज बात है। अभी जैसे अनीता जी ने एक बात कही कि ड्राइवर देना चाह रहा था किडनी। ड्राइवर क्यों देना चाह नहीं, ड्राइवर क्यों देना चाह रहा था किडनी? एग्जैक्टली। किडनी क्यों नहीं उनके दोस्त जो पैसे वाले हैं वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? यही यहाँ पे आके देखिए और- दिक्कत क्या हो रही है। Correct. सी द लॉ वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ का क्या, क्यों लॉ बनाया गया। ये लॉ इसलिए बनाया गया कि लोग बाग गरीब आदमी से किडनी खरीदते हैं। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि गरीब आदमी अपनी किडनी ना बेचे, इसलिए ये लॉ बनाया गया। इसको पैसे वाले, रसूख वाले मिसयूज करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो एडवोकेट शर्मा जी से शायद मिस हुई है। लॉ ये कहता है कि या तो क्लोज रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स की डेफिनेशन है शर्मा जी, देवपाल शर्मा जी आपको पता है वो वाली बात। यस, लेकिन इसके अलावा भी एक क्लॉज है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यस, जिसके अंतर्गत ये लोग सब आ रहे हैं। मुझे बताइए, एक ड्राइवर है, वो कितना भी क्लोज है, उसको अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चला के पैसा 5,000, 10,000, 20,000 रुपए महीना कमा के देना है। अगर आज वो अस्पताल में पड़ा रह गया और उसके बाद उसको प्रॉब्लम हुई, तो उसके घर में ब्रेड विनर कोई नहीं होगा। तो इसलिए जब पैसे वाले नहीं देना चाहते, इसलिए लॉ बनाया गया। लेकिन लॉ मिसयूज होता है और बहुत बुरी तरह होता है। इसीलिए हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो ये दिए हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर जो भी वेरिफिकेशन करना है वो करिए। जब आपको ध्यान हो, एक हमारी गेस्ट आई थी डॉक्टर मोनिस के थ्रू, मिस शेट्टी, उन्होंने भी यही बात करी थी। और उस वक्त ये तय हुआ था कि किस तरह उन्हें टाइम लगा डोनेशन में, जबकि वो दौरानी जेठानी का रिलेशन था। तो वो उस रिलेशंस को एक्सपेंड करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन भाई लाल जी। साहब एक बार बताइए, सुषमा स्वराज और जेटली को किडनी कैसे मिल गई और कहाँ से कमेटी आ गई? ये सब बकवास वाली बातें हैं। ये जो लोग चाहते हैं उनका सब काम हो जाता है, वहां भी कमेटी भी पैसा खाती है मेरे हिसाब से। इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल मामला है। आपको पता है आजकल ईडी और आईटी पीछे लग जाते हैं। आप भी इस बारे में ना बोले तो अच्छा है। हमें परवाह नहीं है, लेकिन मतलब हालत यही है, जिसके लिए चाहो कमेटी हमें मिलाती है, जिसको नहीं चाहो नहीं है। इस देश Yes, next, please, next. Dr. Monis, you want to ask something? No. I want to say that, I mean, I definitely agree with the fact that the relationship list should be expanded, but definitely donation between a driver and a owner, I mean, master, और अभी वो एक और एग्जांपल दे रहे थे जिसमें कि एक क्रिमिनल था, बट उसको उसके क्रिमिनल चार्जेस की वजह से नहीं डोनेट करने दिया। बट आई थिंक इवन इन दैट केस प्रोबेबली देयर वाज सम एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि कि हम आपको प्रोटेक्ट कर देंगे, तुम्हारी लाइफ वैसे भी जेल में कटनी है एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज डेफिनेटली नॉट वायबल एंड दैट शुड, आई मीन दैट इज व्हाट ऑर्गन ट्रेड इज, जिसकी वजह से ये रूलिंग लगी थी। तो just loosening all threads and letting it be free is, I think, going back to square one. And आज के ज़माने में there are more and more ways of exploiting this ruling yet again. So I don't think that it should become completely free, but instead the relation ties should definitely be expanded. So that is my perspective on it, and that's what I think. Anybody else? Yeah, Miss Ritika, I will like to enlarge this. The basic intention behind this act is to prohibit the organ trafficking. Correct. That is the purpose. Hmm. Organs should be given, may be given, so that the needy person may have it. But there should not be any commercial transaction between the donor and the recipient. That's why if the family member is giving, it's all right. It is believable. Hmm. But if some other person in the light of the love and affection is giving,
then it creates a doubt, as in the case of a driver, in the case of criminal person, and so many other persons. Then the doubt is to be removed by that committee. It is a burden has been laid on that committee. And for removing all these doubts, the formalities being passed by these members of the committee, either it is committee of hospital itself or it is a government committee, and that takes the time. That's the problem. इसमें मैं सोचता हूँ एडवोकेट शर्मा व्हाट द डिसीजन इज गुड बिकॉज दे हैव फिक्स्ड अप द टाइम लिमिट. दिस टाइम लिमिट शुड बी एंड्योर्ड बाय एवरीबॉडी कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन देना है. ओनली थिंग इज जो कमेटी है अगर वो ऑनेस्टली वर्क करेगी तो उसे 3 महीने नहीं 1 महीने में भी डिसीजन दे सकती है. नंबर 1. नंबर 2, जो दिव्यपाल शर्मा जी का कहना था उसमें मैं कहना चाहूंगा जिस वक्त पेशेंट को डायग्नोज होता है कि उसको किडनी प्रॉब्लम है उसी वक्त उन्हें अप्लाई करना चाहिए. लेकिन उस वक्त उसके फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि पहला नंबर उनका है किडनी देने का. और इसी वजह से जब वो लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जब डॉक्टर्स किडनी कहते हैं कि अब ये डायलिसिस से भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, तब वो भागदौड़ करते हैं कि मैं कैसे हम ऑथराइजेशन ले लें और नंबर 2 की किडनी ले लें इधर उधर से. तो इसलिए ठीक है 3 मंथ्स का उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया बहुत अच्छा दिया है और मेरे हिसाब से ये चीज. लेकिन एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, क्या ये जजमेंट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट या खाली दिल्ली के लिए एप्लीकेबल? It's a very good question you have raised. I too want to explain this thing. This judgment is only with regard to Delhi. I am in UP, you are at Karnataka or Maharashtra, but this judgment is not applicable there. That's why the High Court has directed this judgment to be placed before the Secretary of Health Ministry so that it may be made applicable to all over the India. Now, it is yet to be implemented by the Health Ministry all over the India. नहीं, पर वो हेल्थ मिनिस्ट्री कर सकती है, उस पे पावर है बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट. रूल मेकिंग पावर इज देयर विद द मिनिस्ट्री. पहले भी 2014 में रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स में अमेंडमेंट करके हेल्थ मिनिस्ट्री इस गाइडलाइन को दे सकती है. ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट से होगा या हेल्थ मिनिस्ट्री? रूल का पार्लियामेंट से नहीं होता, एक्ट का पार्लियामेंट से होता है. रूल्स गवर्नमेंट फ्रेम करती है. यस, पवार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. Yes, it's a very good decision and we should welcome the decision, and as told that it should be it is for only Delhi only. So what through our this thing Rotary Organ Donation International, we should send a letter to all the ministries or the central minister to ask them to implement for entire India. The same law should be applied for every state. So this letter we can send through us. So I put everyone on mute. I think there was disturbance coming. You'll have to unmute before talking. Okay. So I think it's a very good decision. What your suggestion, what you have given, we will definitely write once we will receive the complete order copy, as well as we will be meeting very soon. I am planning to meet the minister there very soon. And if they say that they are going to do it without any further push from our side, that will be fine. Otherwise, no doubt about it, we have to ask everyone to do it. Only my reservation is that we must also create awareness that this is a last resort. Before that, if a person is going with a family, close family thing, or somebody who is not economically weak, see what the committee is seeing is कि कहीं money का transaction तो नहीं हुआ है. अगर डोनर पैसे वाला ज्यादा है तो वो 2-4 लाख 1-8 लाख रुपए लेके नहीं देने वाला है किडनी को अपनी. लेकिन अगर पैसा नहीं है तो डेफिनेटली वो हार्ट भी अपना देने को तैयार हो जाता है आजकल. यस. अच्छा, इंडिया के बाहर क्या कहते हैं, ये क्या सिस्टम है डोनेशन का इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर जो मेरी नॉलेज है, वैसे मैं अभी दीपन शाह भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, वो भी अपने को अनम्यूट कर लें. जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि वहां भी अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है वो डोनेट कर सकता है. वहां भी कमेटी है और उसमें ज्यादातर साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं और वो ये देखते हैं कि कहीं आपका वहां भी कोई और रीजन तो नहीं है देने का. लेकिन वहां परमिशन जो मुझे बताया गया है बहुत फास्ट मिलती है. दीपन शाह जी, जरा आप इसे क्लेरिफाई करें.
Yes, wonderful. Hello, Mr. Goel and everyone. It's a wonderful questions. Yeah, here in America, system is very crystal clear. So the system, how it works, majority people, they usually, what I see, more than 70% people, they decide whether they want to donate or not. So everything registers through the DMV. There is a couple of sites, some of them run by government and state OPOs, like donorlife.net, registerme.org, or njsharingnetwork.org. You can go to the website, you can register. Majority cases, what we see, and Mr. Goel, as you, me, and Kumar Bhai visited NJ Sharing Network, they have a very clear system. Even there is no one register, but if someone pass through this kind of situation, so there is a group of set of people in a hospital, they immediately reach out to the next of kin. Okay, look, your husband, this happened. He did not register, but did he talk to you? Sometimes people don't register, but they talk within their family. So immediately phone call goes right away within a moment. And if it is registered through the any official registration, then family always says yes, and then procedure starts immediately. And also the major things, they only look once the approval goes about the test results, right? Blood results, serology results, any hepatitis, those kind of stuffs. Otherwise it goes very smoothly. Yeah. There is no hurdle, everything is crystal clear here. मिस्टर शाह, क्वेश्चन है जो अनरिलेटेड लोग हैं उनका क्या पोजीशन है? Unrelated means if somebody is not related, suppose I want to donate to someone who is not related to me in US. Yeah, you can do. There is a program, exchange program, that you can go through that, and there is a clear system. I don't remember exactly how it is wording, but you can do that also, and it won't take much time either. It's like a living donor, or you want to give, right? Yeah. So yeah, and as far as UK का जो law है वो बड़ा clear है. Suppose I want to donate my kidney, I can donate the kidney, but whom the kidney is going, that will not be disclosed, because it will go like a bank. A bank means it will be immediately transplanted. So the UK law, where the kidney, if a person wants to donate, he can donate or she can donate, but to whom it is going, it is not there. Like जब हम मंदिर में जाके पैसा चढ़ाते हैं तो हमें नहीं पता वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसी तरह यूके में किडनी जो डोनेट होती है, इसीलिए वहां के जो डोनर्स हैं दे आर अप्रिशिएटेड फार मोर देन अस, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने रिलेटिव्स को डोनेट कर सकते हैं या पैसा लेके करते हैं डोनेट. वहां वाले ऐसा नहीं है, वो लोग बिल्कुल जो रियल में डोनेशन होता है वो यूके में होता है, जो मेरे को वहां बताया गया. यस प्लीज. Yeah, I can chime in here. Especially in the United States, they ask you whether you want to disclose or not disclose. So it's up to the family or donor. Yeah. हेलो लाल साहब, जब आप मिनिस्ट्री में मिलने जा रहे हैं तो आप एक सजेशन दे सकते हैं कि जिस आदमी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है ऑर्गन डोनेशन का, वो उससे किडनी मांगी जा सकती है? क्यों नहीं मांगी जा सकती जब मैंने अपना ऑर्गन डोनेशन का नहीं? इसमें अपने इंडिया में opt-in system है, which we will be discussing in one of the meeting in for future. What is the difference between opt-in and opt-out? अपन क्या, क्योंकि opt-in है इसलिए कोई भी compulsion नहीं हो सकता. Yesterday I was in a meeting, जो एक Rotary Action Group है, जो blood and organ donation के ऊपर उन्होंने exclusive बनाया है पूरे इंडिया का. उसमें मैंने भी यही पॉइंट रखा था. मेरा कहना था कि ठीक है हम ऑप्ट-इन सिस्टम है, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं 1,50,000 अप्रोक्सीमेटली, और उसमें से करीब 60,000 70,000 ब्रेन डेथ डिक्लेयर होते हैं, 80,000 होते हैं. अगर उन्हें कंपलसरी करा दें जो भी ब्रेन डेड हैं, क्योंकि वो किसी कास्ट का नहीं है, क्रीड का नहीं है, किसी का पता नहीं कौन किसका कब रोड एक्सीडेंट में हो गया. लेकिन वहां भी यही पॉइंट आया कि जब तक ऑप्ट आउट सिस्टम नहीं आएगा इंडिया में, जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम अपने पैसे को, अपने प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं बिल बना के, लेकिन अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ओरिजिनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ही हैं, उसको हम किसी को नहीं दे सकते. बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है. ईमानदारी की बात यह है कि ईमानदार लोग और सच्चे लोगों को तो उसके थ्रू जाना, कमेटी के थ्रू जाना पड़ेगा किडनी और उनको लेने के लिए. और नंबर 2 वाले लोग जो हैं अपना सब नंबर नो कमेंट्स डॉक्टर शर्मा.
नहीं Yes, सही next- बात है next question, please. ईमानदार लोगों के लिए कानून हेलो Yes, अरे, yes, Pradeep ji. Yes, प्रेसिडेंट साहब Pradeep. मेरा सजेशन है कि जजमेंट जो आया है बहुत अच्छा है. वी मस्ट अप्रिशिएट दिस जजमेंट. ये जजमेंट के ऊपर अपने पास में वी आर आल्सो हैविंग द फॉर्चुनेटली वेरी सीनियर एडवोकेट्स. Let them critically examine it and give their suggestions so that as a president you can take up the matter with the government of India. Definitely, definitely. गुड With some सजेशन addition or a deletion which is practicable and which is if there is amendment, because rules are required to be made, act is not required to be amended, only rules are to be amended. Probably that will be more easy to do it at the if we as a Rotary Club of organ donation take up the matter. I think this will be more effective. Yeah. So you can decide, President, let the committee examine it, come back Yes, with the please. recommendation and critical examination, because we have heard everybody. Everybody has their own views. Let this Yes. committee see legal point as well as practical point and give the suggestion to the government. Then you can approach to the government. Yes, please. Any other question? अब आपका जो क्वेश्चन था मैं उसका जवाब दे देता हूँ महाजन जी, कि आपने जो पूछा कहा था अपना कि कोई पेशेंट है 12 साल से, उसका फिर दोबारा किडनी फेल हो गया है, तो उसके अगर रिलेटिव्स हैं, अगर वो दे रहे हैं तो उसके लिए परमिशन अलग से होगी. अगर रिलेटिव्स नहीं है तो अनरिलेटेड है तो फिर उसके लिए भी परमिशन होगी, नहीं तो वेट लिस्ट में जाना पड़ेगा. उसमें और कोई चीज अभी तक कोई बाईपास नहीं हो सकता. उसके माँ ने दिया था जी. एक बहुत MIDC में काम करता है. नहीं वो ठीक है, वो अब कोई उसके घर में और फैमिली में कोई मेंबर नहीं है जो दे सकता है, डोनेट कर सकता है? नहीं, उसका माँ का ही ब्लड ग्रुप ये था, मैच था, माँ ने दिया है. नहीं, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है तो उसका अब रास्ता निकल गया है, अब ब्लड ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती. अब स्वैप हो जाती है किडनी, वो दूसरे को चली जाएगी और वो दूसरे की किडनी इनको आ जाएगी. तो ये ब्लड ग्रुप वाला एक्सक्यूज अब खत्म हो चुका है. और कोई एक्सक्यूज है तो बताएं. नहीं, हमने उसको बोल दिया है, तो दूसरा देने वाला भी कोई नहीं ना. फैमिली में कोई नहीं है उसके? नहीं. अच्छा, तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और कुछ रास्ता नहीं है जब तक कि उसका कोई जानकार, उसका दोस्त, उसका सगा संबंधी उसको देना ना चाहे. उसकी चलती नहीं ना जी. दे सकता. और मेरे टाइम में 2000 में दोस्त को मैं दिया. नहीं, वो उस वक्त बात और थी, अब लॉज बहुत चेंज हो चुके हैं, इसलिए नहीं हो रहा है. चलिए, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक यू गो फॉर द नेक्स्ट एजेंडा, दैट इज एनी अदर मैटर. Rotarian Sudhir, Dr. Sudhir Sharan wants to ask something. I'll ask him to Okay. unmute. Yeah. Right now we are discussing Supreme Court or High Court order. There is Supreme Court above that one. And the main issue is unethical behavior on part of certain individuals to acquire the kidney. So can we not appeal to the Supreme Court and get a rectification there that the authority follows certain guardrails in granting approvals in expedited basis? Is there legal provision for that? Professor Saran, that is what the Act says, that the committee is supposed to give the permission or authorization only after verifying everything. But and that's why they are taking much time, because what happens in India, the donor's family and the recipient family, they have to see everything. They have to check the police verification, like Advocate Anita was mentioning about the criminal record, because once a person is a criminal minded or criminal, then it's a presumption is that he or she is going to get the money, and that's why he or she is giving the kidney. So that's why the thing was rejected. But there is no need of going to Supreme Court, because what you are asking, that the government authorities should do their duties honestly, which they are supposed to do. So there is Supreme Court will never say no, they are not doing, they have to do. In my opinion, what you say about this, Advocate Sharma? Yeah, Mr. Goyal, what Mrs. Anita has said, and that is the reality also, that is the judgment of Kerala High Court, and that judgment, this ground of rejecting the application was turned down by the Honorable High Court. And it was specifically mentioned that only because of a donor is a criminal, the refusal cannot be done.
the committee has to look into whether there is any commercial transaction between the donor and the patient or not. If there is any doubt that there is a commercial transaction, the committee will refuse it. But if there is no ground at all of a commercial transaction, that merely on the basis of the donor is a criminal, that permission cannot be refused. How the committee can assess that there is That the discretion of the committee. So many circumstances are looked into, like the financial position, the relationship, the previous terms of these donors and the patients. All these things are to be looked into. Circumstantial evidence is there. If Rotarian Deepan Shah remember, I asked this question when we visited this NJ sharing in USA. I asked the particular question, and the director of I have forgotten, some lady was there, the director, and she replied to me that the committee in USA consists of psychiatrists, and their psychiatrists grill the person, the donor, in such a way that within few minutes or within some time, either if there is something fishy, immediately they come to know that this is something wrong. Either in India, whether we have such type of psychiatrists who are ready to give time and do the things, I have a doubt, especially in the committees which are working. No psychiatrist is there in the committee in India. They are there. Sorry, they are there or not, Sharma ji? No, not at all, not at all. So we have to, what we should do is, we can request Rotarian Deepan Shah to study it in USA, how they are doing it, what is the how the committee is consisting of whom, and then we can make, and as Advocate Rotarian Pradeep has also suggested, that we will take the opinion of our legal cell, which consists of you and Advocate Anita and Advocate Pradeep and whosoever can give input, and then we can put up the matter to the government. Yes. We have to give time to Rotarian, is he there? Pawar is there or he has gone? He was here. He is No, here. he's He's here. Rotarian Pawar. He's here. He's on mute. I will ask him to unmute. पुरुषोत्तम पवार जी, प्लीज अपने को वो करिए, वीडियो ऑन करें. जब तक वो आ रहे हैं, रूपा अरोड़ा जी, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. हाउ मच टाइम, आपको कितना टाइम लगा था देने के लिए परमिशन मिलने में, जब आपने अपने हस्बैंड को दी थी? अप्रोक्सीमेट 15 to 20 days. ये भी ज्यादा ही, कम ही लगा था एक्चुअली, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ही उन्होंने कमेटी बनाई थी और लीगल पेपर्स वगैरह सारे तैयार किए थे. बहुत ज्यादा तो नहीं, 7-8 दिन मिनिमम लगे. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नियरेस्ट रिलेटिव है, ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं. जी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में वी आर नॉट ऑनेस्ट, वी आर वेरी ऑनेस्ट. ओनली थिंग इज, जो उन्हें कहीं डाउट होता है, हॉस्पिटल को डाउट होता है, उसमें वो जरूर टाइम लगेगा और उसमें लगता है टाइम. उसको कट शॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप कोर्ट ने कहा है 3 months में करना है. Yes, I think, thank you very much, Rupa ji, to clarify this. Rotarian Pawar, Purushottam Pawar, you want to discuss something now, which you, Rotarian Pawar? Thank you. Yes. आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज. Yes, मेरा वीडियो ऑन है. और अभी अवेयरनेस की जो बात चल रही थी, सो द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के माध्यम से हमने महाराष्ट्र में आज तक अवेयरनेस के लिए आज तक पद यात्रा, सो चल के हम लोग पूरा महाराष्ट्र अभी तक पूरा किया है. ओनली नॉर्थ महाराष्ट्र जो है, खानदेश रीजन जिसको कहते हैं, नंदुरबार, जलगांव और धुलिया डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे बाकी थे. अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट पूरे होने के बाद में महाराष्ट्र का हर जिला हम कवर कर लेंगे. और अभी तक हम चल के जाते थे, जो 50 दिन, 45 दिन, 52 दिन ऐसी हम पदयात्रा करते थे. इसके लिए हमने आज तक 4 पदयात्रा पूर्ण की है. एंड देन अभी हम चलने के बजाय गाड़ी से जाएंगे, सो दैट बीच का चलने का जो टाइम है वो मिनिमाइज हो जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा गाड़ी से हम माध्यम से हम पहुंचेंगे. और एक गांव में, एक सिटी में पहुंचने के बाद हमारी टीम डिवाइड हो जाएगी 2 में, 3 में, और हम उसके लिए अवेयरनेस करेंगे. मैं हमारे रोटरियंस और सभी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि इस मिशन को, जो अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा जरिया है, इसको पहुंचने के लिए हम लोग इसके लिए हमारा एक 8 से 9 लाख रुपए का हमारा एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस के लिए हमने एक अपील किया हुआ है। वो अपील मैं आप चेयरमैन साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अपील हमारे रोटरी मेंबर्स तक जाए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, ये लोगों तक और पहुंचाया जाए, और इसको सपोर्ट भी आपसे मिले। हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी दिन आप इस यात्रा में अगर शामिल हो जाए, तो या तो ओपनिंग के दिन या कंक्लूडिंग के दिन अगर आप सम्मिलित हो सकते हो, बीच में किसी दिन आप आ सकते हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to support the cause and the mission. Thank you. Thank you very much, Rotarian Pawar, for appealing about your very, very noble cause, the Rath Yatra. क्योंकि रथ यात्रा इंडिया में जो निकलती हैं वो डिफरेंट कॉजेस के लिए निकलती हैं। आप ऑर्गन डोनेशन के लिए निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ कि रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। फाइनेंशियल्स का अभी मैं नहीं कह सकता कमिटमेंट, क्योंकि हमारा बिल्कुल नया क्लब है, लेकिन यस, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, अगर उन्हें लगता है कुछ भी करना चाहेंगे, तो अगर कोई बताएगा तो मैं आपसे आपके वो ले लूंगा अकाउंट डिटेल्स, so they can directly transfer the money to you. We have no objection in that. और जहां तक आपका इनवाइट है, यस, जो भी जुड़ना चाहें, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी बात है एक दिन जाके वहां पे पार्टिसिपेट करना। ये संस्था पुरानी संस्था है, और इसमें ATG और CSR बेनिफिट्स सब फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। So this program is currently going on in Maharashtra. Yes sir. Yes sir. डेट बताइए, डेट्स कौन सी? हम लोग 5 फरवरी 5th ऑफ फरवरी से लेके हम लोग 14th फरवरी तक हम लोग ये पूरी करेंगे। ये 8 दिन की रहेगी। और जी कुछ पूछ रहे सर आप? एंड ऑफ द फरवरी में 14 No, February, this is from 5th February. 5th to 14th February, 8 days की। Yeah. So there was a planning, so that's what. But date is not matching with my schedule. Okay. Yeah. Thank you. Any other matter now? Please try. Yeah. Yes. Yes, over to Rotary and Ritika. Any other matter to be discussed with the permission of the chair? If anybody has any other thing. Yes, Rotary. Yeah, I wanted to raise one issue. I wanted that all the members of organ donation, this particular Rotary Club of organ donation, they should also place their, the organs. Can we do it, everybody? Or those who have already pledged? I have already done. Already, If you have done it, you can reconfirm, but those who have not done it, can we do this? Yeah, it's a good suggestion. All the members. All the members of Rotary Club of Organ Donation who has not yet donated or pledged to donate, please pledge to donate organs wherever you want to donate. The ideal site for India is the Noto site. Just go for their QR code. Otherwise, I am going to circulate that QR code in our Rotary site, so one can donate themselves, and those who have already donated but their family members, if they have not donated, please try to convince them and say that they should also donate. Good suggestion, Rotarian. I will add one more thing, that we will keep the criteria. The person who has pledged his organ, he can only become the member of Organ Donation International. पवार साहब, थोड़ा सा क्राइटेरिया इसलिए नहीं चलता कि हमारे यहाँ एमपीज के लिए भी हम सोचते हैं कि जो लोग एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए का लड़ते हैं, पंचायत का लड़ते हैं, उन सबके लिए क्राइटेरिया पहले होना चाहिए, लेकिन वहां भी वो क्राइटेरिया नहीं चल पा रहा है। बट यस, यू आर राइट, उधर तो क्राइटेरिया चलता है। सॉरी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ना? नहीं, ऑर्गन डोनेशन का नहीं है ना, अभी कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं कर फॉर्म भर रहा है। फॉर अपना ऑर्गन डोनेशन का स्पेसिफिक रीजन का, we must examine this. Yeah, we will definitely try see where, if there is no it is not contradicting of if it is not contradicting the Rotary views or Rotary's guidelines, then we can very well say to all the members. Mr. Goel, it cannot be done legally, but it can be done morally. Okay, so now we have the legal advice available with us. Yeah, over to you, Ritika.
All right, thank you very much. Moving on, I request Rotarian Ramnath Pradeep to please give a vote of thanks. Dear President and all other members, board members, it's really a privilege for me to offer a vote of thanks. Today, the subject matter was very, very important, and particularly the legal issues which has come up and the suggestion which has come through the court of law, means from the judgment through judgment. I think this is much appreciated, and we must take a aggressive view on this matter, because unless we will become aggressive and put forward through the Rotary Club of organ donation, nobody is going to hear. So this is an opportunity for us, supported by the legal judgment, maybe a state government, maybe, but this judgment has already gone to the Ministry of Central Ministry. So probably this is a good opportunity for Rotary Club of organ donation to take up the matter with the government, so that this is in reality this can be implemented, because there is no law to be made. There is only the rules are to be made, which is within the purview of government as well as within the purview of the Secretary Department, which they will certainly will do it, looking to the demand if there is a pressure from us. So this is a good demand, and good discussion has taken place. A lot of suggestion has come. So compliments to all of you. And this is a now we got a judgment in our hands. Probably we should take up vigorously with this government. Probably something will come out. Thank you very much for attending this program today, to everyone. And thanks to Ritika, the secretary, as well as president of Rotary Club organization, for sparing their valuable time, and all members. Thank you very much, and good night to everyone. Thank you very Meeting is much. adjourned. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you. Thank you.